Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Are you hearing me? Participants, are you hearing me? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Nobody is answering my question. I hope you are hearing or not hearing. I don't know. Can you hear my voice? If there is some problem, please write me on chat box. Unmute your mic and talk to me if you can. Please unmute. Ahmad Abu Zar. यस सर, अब आ रही है आवाज आपकी? पहले नहीं आई? नो सर, अभी आई है। अभी आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, और शेयर स्क्रीन में नजर आ रहा है? यस सर। क्या लेक्चर नजर आ रहा है? यस सर। ये क्या है? आपको क्या लेक्चर में क्या चीज उड़ता हुआ नजर आ रहा है? सर ये ऊपर बर्ड नीचे प्लेन है। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। So let me start my lecture. So my today's topic is forces acting on a plane when it is flying. There are 4 forces acting on a plane when it flies, just like a bird. So first of all, you see bird is flying forward from right to left. So this force pushing him towards left, helping him to move from right to left, it is thrust. But air has resistance, so other forces against the thrust acting in front of the bird, which try to oppose the thrust, and this is called drag. So bird's own weight is pulling it downward because of gravity of Earth. So this is downward force acting vertically downward, this is gravity force. And against gravity force, because of bird's movement and because of bird's wings open, so because of aerodynamic effect, force upward, which is called lift, is acting on it. This lift is created because of aerodynamics of the wings and body of the bird. The upper part of the body of the bird pressure is less, lower part of the body of the bird pressure is more. Because of that, lift force, upward force is acting and bird is not falling down. The same forces act on the aeroplane. Aeroplane moving in this picture from left to right. So that means thrust is working from left to right. This is the jet engine which creates this thrust. But aircraft's body has a resistance to move because of air movement, frictions and friction acting on the surfaces of the aeroplane outside and inside. So these are called drag forces. Thrust and drag forces oppose each other. Similarly to birds, there is a lift force acting on the aeroplane because of shape of the aeroplane wings. Under the wings pressure is high, up above the wings pressure is less because of aerodynamic shape of the wings. So that is why upward force is created, which is called lift. This lift must be equal to weight of the aeroplane, its passengers and all cargo, what is inside it, all payload. So it forces it downward because of gravity. So gravity, weight and lift must be balanced. So that is why airplane will not fall. Now thrust and drag must be equal, and only then aircraft will fly with a constant speed. If drag is more than thrust, then aircraft will slow down. If thrust is more than drag, then aircraft will go faster. Its velocity will change. Now, this is another. There is a Glenn Research Institute, Glenn Research Center. Glenn was an astronaut, American astronaut, Glenn Research Center of NASA. They have lectures, online lectures on their site. From there, I've downloaded these pictures.
So one of them is this one where forces F upon W is defined. What is F upon W? This is thrust to weight ratio. Thrust to weight ratio is one important factor of selection of aircraft. If you need faster aircraft, military aircraft, you need F upon W should be high. That means thrust should be much, much higher than the weight. A by G ratio or F by W ratio is there. The aircraft will have higher acceleration. Higher acceleration means it will attain higher velocity very quickly. So high climb rate. So it will fly very quickly to the sky, and then it can make a change in velocity wherever it is required to run after an enemy aircraft. So then thrust to weight ratio should be high. Now this picture shows again 4 forces, and which we have discussed. And this picture forces in a climb. During climb, you see during climb there is a climb angle. So climb angle, that aircraft is not horizontal, it is a bit vertically inclined, and that is angle making with horizontal, it is C. So climb angle C, in that case these forces act like this. So vertical force is equal to vertical MA, vertical force is equal to MA according to Newton's law. MA and these F sine theta, D sine theta, theta means C, C it is written, F sine C, D sine C, L cos C. So these are forces, algebraic sum minus W, they act and they make vertical force. So now horizontal component of all these forces is given in the next slide. So we will now force in vertical direction, force in horizontal direction, and under the action of these vertical and horizontal forces, aircraft climbs up. So there is excess thrust defined as F minus D. So thrust minus drag is called excess drag. If thrust is more than drag, the difference between F and D is called excess drag. So its vertical and horizontal components are mentioned below. So now coming on our own topic, our own textbook, and that is this one, McConaughey, chapter 10. So here we can see the thrust and thrust power of a turbojet and a turboprop. So you can see the left side this turbojet, this turboprop में फर्क ये है turbojet के अंदर flow कम होता है, turbojet engine के अंदर कम होता है, बाहर surface के ऊपर ज़्यादा होता है क्योंकि fan is bigger in front. So turbojet में all the air flow is inside the engine, and this is this picture on your left. So thrust per unit area, thrust per unit mass flow rate, m dot is equal to 1 kg per second. Then thrust is equal to Cj minus Ca. What is Cj? Is the jet velocity. Exhaust velocity जो jet की है, that is Cj, or incoming air की velocity जो Ca. Ca is actually aircraft velocity. So air, atmospheric air is stationary. We assume if atmospheric air is stationary, jet is moving, turbojet is moving with velocity Ca. So then with respect to turbojet, inside the turbojet, velocity of air is Ca. So Cj minus Ca is the thrust per unit mass flow. Actually it is m dot Cj minus Ca. M dot is equal to 1. Then per unit mass flow rate is Cj minus Ca. This is the force acting to move, thrust force. Now the propulsive power is then given by thrust force is propulsive power. That was force. Force multiplied by distance per unit time, this is power. Propulsive power is force multiplied by velocity. So velocity of aircraft is Ca and thrust is Cj minus Ca. So equation 1024 represent power per unit flow rate, per unit mass flow rate. This is the rate at which work must be done in order to keep the aircraft moving at the constant velocity Ca against the frictional resistance drag. The net work output from the engine is equal to kinetic energy of the jet, air, kinetic energy given to the air. Difference. The kinetic energy at inlet at Ca square by 2, kinetic energy at the outlet is Cj square minus 2. So Cj square minus Ca square is equal to change in kinetic energy of the air passing through the aircraft. So this is the net work done on the air. Now this is the work output used in 2 ways. It provides thrust work as well as given in the above equation, as well as
it gives air kinetic energy Cj minus Ca square by 2. Now, this is kinetic energy is this one. Now the air previously at rest is given the absolute velocity Cj minus Ca. And in case Cj minus Ca, this is relative velocity of air. यानी कि Cj आउटलेट पे Ca इनलेट पे तो relative velocity difference in velocity Cj minus Ca है. इसलिए kinetic energy given to the air is Cj minus Ca whole square. Right? ऊपर जो आपने पढ़ा Cj square minus Ca square. This is the engine power. This is the engine power and Cj ये जो thrust है engine thrust वो है वो work done by the engine ये है Cj square minus Ca square. लेकिन Cj minus Ca whole square by 2, this is actually kinetic energy imparted to the air. Now, by equating this, adding these forces, that is thrust force plus thrust power Ca multiplied by Cj minus Ca plus kinetic energy of the air is equal to, अब इसको आपने algebraically इसको खोल लिया, तो net result is 2 Cj Ca divided by 2. So work output from the engine is Cj square minus C square by 2, and absolute ये क्या है work output इसके दो ये net work output is equal to 2 Cj Ca divided by 2. So 2 will be cancelled and Cj into Ca is the net work done, and work output is Cj square minus as equation 1025. Now effect of pressure thrust on power output. अभी तो आपने देखा है कि ये जेट का thrust है, velocity kinetic energy की वजह से thrust create हो रहा है, इंजन को मूव करने के लिए force create हो रही है, इसको हम thrust कहते हैं. लेकिन एक force create होती है pressure difference की वजह से. अगर कोई बॉडी के एक तरफ कुछ और प्रेशर है दूसरी तरफ कुछ और है और दोनों में डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस की वजह से बॉडी मूव करेगी, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर थ्रस्ट. ये दो तरह का होता है, इनलेट पे और आउटलेट पे. सबसोनिक फ्लाइट के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम फ्लाइट पे तो जेट के इनटेक पे जो प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लिहाजा वो फ्रंट वाला जो प्रेशर थ्रस्ट है वो एक्ट नहीं होता सबसोनिक फ्लाइट. लेकिन बैक वाला एग्जॉस्ट वाला थ्रस्ट है, तो वो एग्जॉस्ट नोजल चाहे वो सबसोनिक हो या सुपरसोनिक हो, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो उससे हमें यूजफुल थ्रस्ट मिलता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और दैट इज कॉल्ड प्रेशर थ्रस्ट व्हिच इज एडेड टू द थ्रस्ट. अगर फ्रंट वाला सुपरसोनिक में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज सुपरसोनिक ग्रेटर देन साउंड, तो एक शॉक लगता है इनटेक के सामने, उसकी वजह से एरोडायनामिक शॉक की वजह से, और अचानक प्रेशर इंक्रीज होता है शॉक के अंदर की तरफ जो कि इनटेक की तरफ, और उस प्रेशर इंक्रीज की वजह से इंजन को फायदा होता है. लेकिन नुकसान भी होता है कि ये जो फ्रंट में जो प्रेशर डिफरेंस है इनटेक में और एटमॉस्फेरिक में, उससे नेगेटिव थ्रस्ट मिलता है, यानी फ्लाइट को के अगेंस्ट में, यानी थ्रस्ट के अगेंस्ट में, यूजफुल थ्रस्ट के अगेंस्ट में ड्रैग फोर्सेस के तौर पर काम करता है प्रेशर थ्रस्ट फ्रंट वाला सुपरसोनिक फ्लाइट में. वो आगे इक्वेशन में आएगा. नाउ द प्रोपल्सिव एफिशिएंसी ऑफ द इंजन eta p, so this is equal to it is defined as the thrust work divided by the rate at which work is done on the air in the aircraft. So therefore ऊपर की जो दो equations है 10, 24, 25, so that is thrust power is equal to Ca multiplied by Cj minus Ca, or kinetic energy which is the rate at which work is done on the air, that is change in kinetic energy of air, to Cj square minus Ca square by 2. तो ये इस तरह आ गया propulsive efficiency की definition. तो आप इसमें से this is इसको आप short कर सकते हैं, eta p is equal to 2Ca divided by Cj minus Ca. अब आप प्लॉट अगर करें efficiency versus speed of aircraft kilometers per hour, तो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी ये पैराबोलिक टाइप की है, ये इंक्रीज होती है अप टू तकरीबन 400 500 किलोमीटर्स पर आवर, up to 600 you can run on this,
then after 600, efficiency starts decreasing. Maximum efficiency, 85% is achieved on about 500 kilometers per hour, but up to 800 kilometers, it has 80% efficiency. So propeller aircraft can be run from 85 to 80% efficiency at a speed of 500 to 800 velocity. But jet engine की efficiency continuously increase होती है, जितनी भी speed बढ़ाओ उतनी उसकी efficiency बढ़ेगी. तो jet aircraft आप देख रहे हैं 800 से ऊपर जितने भी फ्लाइट्स हैं एयरक्राफ्ट हैं वो जो है ना वो जेट इंजन वाले होते हैं, प्रोपेलर वाले नहीं होते. तो प्रोपेलर 800 850 किलोमीटर पर आवर तक चलाते हैं, और अगर सोनिक हो या सुपर सोनिक हो तो फिर जेट इंजन चलाते हैं, और इसकी एफिशिएंसी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. अप टू 1200 किलोमीटर पर ये एफिशिएंसी है, 1500 किलोमीटर पर आवर पर ये एफिशिएंसी है. तो ये बिल्कुल मुसलसल कर्व इसको इंक्रीज हो रही है. ना रैम जेट इंजन के बारे में देखिए कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. रैम जेट आप पढ़ चुके हैं. रैम जेट क्या होता है, ये ऊपर रैम जेट ड्रा किया गया है. 1, 2 ये इनटेक डक्ट है, और 3, 4 एग्जॉस्ट डक्ट है. इसमें कोई टर्बाइन नहीं, तो ये टर्बाइन इंजन नहीं है, ये बस रैम जेट है, लेकिन है जेट इंजन. तो इसकी जो टीएस डायग्राम बनती है, प्रोसेस 1, 2 इज द कंप्रेशन प्रोसेस और डिफ्यूजन प्रोसेस इन द इनटेक डक्ट. सो इनटेक डक्ट इस तरह बनाई जाती है कि डिफ्यूजर का काम करता है, ये कंप्रेशन का काम करता है. तो इसमें कंप्रेसर के बगैर कंप्रेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ रैम इफेक्ट. और टर्बाइन की बजाय नोजिल है, टर्बाइन में एक्सपेंशन नहीं होता, नोजिल में एक्सपेंशन होता है. तो नोजिल से प्रोसेस 3, 4 होता है. ये जो ब्रोकन लाइन शो की गई है, ये रियल प्रोसेस है with irreversible losses. 3, 1, 2 broken line, 3, 4 broken line, or 1, 2 with subscript s, 0.2 s, it shows isentropic process. 0.4 s shows isentropic process in turbine. 1, 2 s shows isentropic process of compression in the intake duct. So now compression process in intake duct of a ramjet takes place like this. If we apply from state 1 at point 1, that is this is state point 1. See in the diagram, this is point 1, just intake of the inlet duct. So total energy is equal to enthalpy plus kinetic energy, so per unit mass flow. So H1 plus Ca square by 2. So H1 C1 square by 2. Inlet velocity of air is C1. So ये इसलिए कि चूंकि रैम जो है रैम जेट जो इसकी वेलोसिटी C1 है, यही वेलोसिटी एयर की C है, तो C1 स्क्वायर by 2 हो गया. Now आइडियल गैस है एयर, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू Cp T1, और नाउ वी हैव Cp T1 plus C1 square by 2 Cp by definition. ये जो second part है T1 का, T1 is the static temperature, C1 square by 2 Cp is called dynamic temperature, और इन दोनों को मिलाने से इसको stagnation temperature बनता है, जिसको T naught लिखते हैं. So T naught का मतलब stagnation temperature, और आगे 1 है, naught के आगे 1 है सबस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब 0.1. So intake पे जब हम intake velocity नेग्लिजिबल ना हो, तो हमने आपको पहले बता चुके पिछले लेक्चर में कि उसकी प्रॉपर्टीज हम स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज लेते हैं. टेम्परेचर स्टैग्नेशन टेम्परेचर, प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर लेंगे, नॉट स्टैटिक. नाउ Ca square by 2 is equal to Cp T naught 1 minus T1. So this is the difference, dynamic temperature. So T naught minus T naught 1 minus T1 is equal to Ca square by 2 Cp. So this is energy equivalent of the velocity of air, temperature equivalent of velocity of air. Now applying isentropic process T naught upon, if अगर ये intake duct का process reversible है और adiabatic, तो इसलिए बहुत fast है, इसमें heat transfer नहीं होता, quickly हो जाता है. तो अगर friction effect नहीं है, तो then T naught upon T1 is equal to P naught upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma, where gamma is equal to Cp of air, which is 1.4, and T naught 2 minus T naught 1 is equal to Ca square by T naught 1 minus T1 is the difference between static temperature and stagnation temperature, which is equal to velocity square and the kinetic energy of the velocity divided by Cp. Now the isentropic efficiency of intake duct can be defined as T1 minus T2
डिवाइड बाई T1 minus T12 minus T1 naught. तो ये जो इनटेक एफिशिएंसी जो है T1 naught minus T1 is equal to T1, सॉरी ऊपर जो है T1 आपका एयर है और माइनस T1 है, और ये नीचे जो है टोटल है यानी T02 minus T1. So T01 minus T1 divided by T02 minus T2. 1 जो इनटेक ऑफ द डक्ट है और इनलेट ऑफ द डक्ट है, और 2 जो है आउटलेट ऑफ द डक्ट है. दोनों सूत्रों में हम डिफरेंस इनटेक एफिशिएंसी इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा T, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टोटल टेम्परेचर and stagnation temperature and static temperature at these 2 points. So now how to start ramjet? Ramjet खुद ब खुद start नहीं होता, उसमें turbine नहीं है, compressor नहीं है. So an aircraft powered entirely by ramjet would require an auxiliary power supply for starting in order to attain the velocity necessary to give a large enough ram compression. Ram compression के लिए velocity जरूरी है, initial velocity, तो उसके लिए इसको पहले चलाना पड़ता है. या तो ग्राउंड पे किसी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी पावर के जरिए चलाते हैं, या उसमें कोई कंप्रेस्ड एयर सिस्टम रखते हैं या फ्यूल सिस्टम रखते हैं जो कंबशन करता है और उससे वेलोसिटी क्रिएट करता है. नाउ गैस टरबाइन के चैप्टर में ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो गैस टरबाइन का जो पावर टरबाइन होती है उसमें एक कंप्रेसर होता है, टरबाइन होती है, कंबशन चैम्बर होता है और शाफ्ट होती है. शाफ्ट के साथ हम जनरेटर वगैरह लगाते हैं. लेकिन यही गैस टरबाइन अगर हम एयरक्राफ्ट में यूज करें तो शाफ्ट की जरूरत नहीं है. शाफ्ट सिर्फ कंप्रेसर के साथ कनेक्टेड है और सिर्फ कंप्रेसर को पावर देती है जितना उसको चलाने के लिए काफी है, जितना एयर फ्लो उसको चाहिए. लेकिन मजीद एक्स्ट्रा पावर जो है जो टरबाइन क्रिएट करती है उसको हम नोजल में से गुजारते हैं फ्लो को, और उससे हमें जेट थ्रस्ट मिलता है, एग्जॉस्ट मिलता है. तो ये बस गैस टरबाइन का जो पावर साइकिल, उसी तरह जेट साइकिल, उसमें जरा सा डिफरेंस है कि हम शाफ्ट पावर लेने के बजाय जेट पाइप में उसको एग्जॉस्ट करते हैं, उससे थ्रस्ट मिलता है. तो 1 to 2 प्रोसेस, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक में तो S के साथ सबस्क्रिप्ट S लगेगा. अगर रियल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, 1 2 ये ब्रोकन लाइन के साथ. और ये जो हो गया कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेसर के अंदर प्रोसेस. टरबाइन के अंदर प्रोसेस होगा 3 4 रियल और 3 4 S आइडियल. और जो जेट इंजन जेट पाइप में जो ये एग्जॉस्ट पाइप में, जेट पाइप में जो प्रोसेस होगा, इट इज जस्ट लाइक टरबाइन फ्रॉम 4 to 5. अगर आइसेंट्रोपिक है नोजल तो 4 to 5 S होगा. अगर रियल फ्रिक्शन के साथ है तो 4 to 5 विद ब्रोकन लाइन होगा. सो दिस इज कॉल्ड TS diagram of gas turbine cycle of jet engine. Now the next topic is heading is the effect of intake velocity and diffusion process in the intake duct of a turbojet. तो टर्बोजेट जो इंटेक डक्ट होती है उसमें इंटेक वेलोसिटी अगर नेग्लिजिबल नहीं है, उसका अपना एक इफेक्ट होता है. उसको डिजाइन इस तरह किया जाता है अगर डक्ट को कि वो डिफ्यूजन का काम करे, यानी कंप्रेसर का भी काम करे जिस तरह रैम जेट में होता है. तो फिर उसका टरबाइन साइकिल ये बनता है, TS डायग्राम ये बनती है कि जीरो आप लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. अगर जीरो कंडीशन है तो इनलेट पे इंटर होने के बाद बिकॉज ऑफ वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने से उसका जो है ना उसके अंदर जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, डिफ्यूजर का काम करेगा इनलेट, तो प्रेशर इंक्रीज होगा. तो वो इनटेक डक्ट जो है ना वो कंप्रेसर का काम करती है जिस तरह रैम जेट में होता है. फिर असल कंप्रेसर का काम यहाँ से शुरू होता है पॉइंट 1 से, 0 से शुरू नहीं होता. 0 से 1 तक इनटेक डक्ट में काम होता है कंप्रेशन का प्रोसेस जो कि डिफ्यूजर है, डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है. और 1 to 2 एक्चुअल फ्लो कंप्रेसर है उसमें होता है. 2 to 3 ये कंबशन चैम्बर में हीट एडिशन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. लेकिन एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर इज अ प्रेशर लॉस इन द कंबशन चैम्बर P2 minus P3. कंबशन चैम्बर में इनलेट प्रेशर P2 होता है तो आउटलेट प्रेशर P3 है, उससे नीचे है. P2 की लाइन P3 से नीचे है तो P3 स्लाइटली लेस देन P2 बिकॉज ऑफ pressure losses in the combustion chamber. उसके बाद combustion chamber से एग्जॉस्ट होने के बाद टरबाइन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस इंटर होती है और उसमें टरबाइन में अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 3 4 S होगा
अगर रियल है तो 3-4 होगा, वहां से आगे जेट का ये प्रोसेस दिखाएगा. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ टीएस डायग्राम्स. लेकिन इनलेट वेलोसिटी जब नहीं होती नेग्लिजिबल, तो हम मैंने कई बार बता दिया पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में 3-4 बार बता चुका हूँ कि उसकी तमाम प्रॉपर्टी टेम्परेचर की और प्रेशर की वो हम नॉट में लिखते हैं. नॉट का मतलब स्टेग्नेशन. स्टेग्नेशन का मतलब सडनली ब्रॉट टू रेस्ट आइसेंट्रोपिकली. फ्लो सडनली ब्रॉट टू रेस्ट आइसेंट्रोपिकली. उस सूरत में जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक, दैट इज कॉल्ड स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी. स्टेग्नेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज T01 minus T02 divided by T0, यानी कि delta T between stagnation temperature and state at 1 and 0. So T01 minus T01 isentropic minus T0 divided by T01 minus T2. और ये जो रिलेशन है आप विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम पढ़ेंगे, ये ऊपर जो दी गई है ये वाली. लेकिन इसमें ये जो T है that is not, it is not stagnation temperature, it is static temperature. इक्वेशन में static temperature नहीं लिखा हुआ, static में stagnation temperature लिखा हुआ with not. So ये 4 इक्वेशंस है जिसमें हमने डिफाइन किया है, which we have defined, where we have defined these 4 equation: isentropic efficiency, isentropic efficiency of turbine, compressor and jet pipe. उसके बाद ये आप पढ़ लीजिएगा टर्बोप्रॉप के बारे में. उसके बाद एक एयरक्राफ्ट पे दोबारा हम आ रहे हैं. अब हम जो एयरक्राफ्ट को हम डिफाइन थ्रस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं कैलकुलेट, वो उसमें प्रेशर थ्रस्ट भी काउंट होगा. इसमें ये आप पढ़ लीजिएगा, प्रेशर थ्रस्ट आप देख रहे हैं कि PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय A माइनस A2, ये A और माइनस A2 वगैरह ये सब समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखनी पड़ेगी. ये ऊपर है, आप 2 डायग्राम्स है. ये जो लिखा है ये देखा है एयरक्राफ्ट के सामने ये 2 इंजन है, राइट. ये ऊपर नीचे इसके आगे लिखा हुआ एयर इनटेक एरिया A1. तो जेट इंजन का जो इनलेट है उसका ओपनिंग है, उसका एरिया जो है जिसके अंदर एयर इंटर हो रही है A1 है, और एग्जॉस्ट हो रहा है उसका एरिया A2 है. एक तो A1 A2 का मतलब यहाँ से समझ लें. दूसरा A विदाउट 1 and 2 A, इसका मतलब समझ लें. इसको कहते हैं सिलहुइट एरिया. सामने से जहाज को देखें, फ्रंट एलिवेशन तो आपको ये नजर आएगा, ये आउटलाइन है ब्लैक कलर की जहाज की, और सामने से एलिवेशन लें तो ये आएगा, और इसमें जितने वाइट पोर्शन है दिस इज एरिया A. दिस एरिया इज कॉल्ड सिलहुइट एरिया. तो सिलहुइट एरिया को सामने रखकर देखें तो अगर F is the net force due to hydrostatic pressure, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो जो एयर का लगता है बॉडी के अंदर है, इंजन के अंदर है और बॉडी के ऊपर है, ये सारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है. उस और फ्रंट पे बैक साइड पे तो एग्जॉस्ट पे इनटेक पे, तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फ्रिक्शन की, उससे फ्रिक्शन होती है. जहाँ जहाँ रगड़ खाती है जेट इंजन के अंदर से गुजरे, हवा है बाहर से गुजरे या विंग के ऊपर से गुजरे, उसका एक फ्रिक्शन है प्रेशर का, उसका प्रेशर फोर्स होती है एक्टिंग, और उसकी वजह से उसको हम F कहेंगे. P1 A1 जो है वो चूंकि P1 मल्टीप्लाइड बाय A1 एक्टिंग towards the outside, so towards right side, so this is positive, towards left side P2 minus A2 this is negative. तो उसके बाद अगर हम इसको इक्वेट कर ले इस फोर्स को रिएक्टिव फोर्स है, ये तो वो जो ऊपर जो इक्वेशन है वो शो कर रही है F, वो जो इक्वेशन जो फोर्सेस का बैलेंस है वो फोर्सेस है जो फ्लूइड के ऊपर इंजन की सरफेस एक्ट कर रही है. तो लेकिन ये जो फोर्स है जितनी फ्लूइड के ऊपर इंजन फोर्स एक्ट कर रहा है उतनी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है ना इंजन के ऊपर फ्लूइड एक्ट कर रहा है. तो दिस इज R is the reaction force, so both are equal. So this R actually pushes the aircraft. This is the thrust. So R minus D, R को पोज करने वाला ड्रैग है, और ड्रैग आपको ऊपर बताया था 4 फोर्सेस में ड्रैग थ्रस्ट का अपोजिट डायरेक्शन है. उसके आगे हमने एक यूजफुल थ्रस्ट एक और भी आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय A2 minus A1. तो जेट इंजन का जो इनलेट और आउटलेट का जो A1 A2 था उसका एरिया डिफरेंस था, उस पे एक प्रेशर एक्ट कर रहा है जो कि ग्रेटर देन जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ से उसके ऊपर थ्रस्ट क्रिएट होगा. डिफरेंस प्रेशर डेल्टा PA मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एरिया.
So now total thrust is equal to drag, क्योंकि जब constant speed से याद उड़ रहा है, speed ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही है, तो thrust is equal to drag. So this is the total thrust, including reactive force, reaction force, जो जेट का रिएक्शन फोर्स है वो R है और प्रेशर थ्रस्ट ये है. तो उससे पहले हमने m.cj माइनस CA लिखा था, उसमें प्रेशर थ्रस्ट नहीं था, इसमें प्रेशर थ्रस्ट भी है. अब प्रेशर ये प्रेशर थ्रस्ट यहाँ जो आ रहा है PA1 माइनस A2, उसको आपने खोल लिया तो ये आ गया. तो ये फाइनल इक्वेशन ये आ गई. तो इसमें जो आखिरी इक्वेशन है अगर सब सोनिक है, ये फ्रंट का एंटी थ्रस्ट है, यानी फ्लाइट को अपोज कर रहा है ये वाला थ्रस्ट प्रेशर की वजह से. तो सुपरसोनिक में ये होता है, तो सबसोनिक में ये जीरो हो जाएगा. सबसोनिक की ये इक्वेशन बनेगी. So with this our syllabus is completed, and after this I think our syllabus is completed, and I will give you homework assignment quizzes, and I will give you possible model papers. याद रखें कि ये comprehensive एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन. जिस तरह कॉलेज खुला था तो उस वक्त हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन अलग नहीं होता था. प्री मिड टर्म का अलग होता था, पोस्ट मिड टर्म का अलग होता था सिलेबस. तो चूंकि प्री मिड टर्म सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ, जिस दिन आपका इम्तिहान होना था मिड टर्म, उस दिन छुट्टी हो गई थी, तो आप मिड टर्म को भी कवर करेंगे, प्री मिड टर्म के चैप्टर्स भी इसमें शामिल होंगे फाइनल एग्जाम. इसको इसीलिए कहा गया है कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब A to Z, इसका मतलब प्री मिड टर्म पोस्ट मिड टर्म सारा सिलेबस शामिल है. तो उसके लिहाज से मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा, तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा, घर में उसका सोल्यूशन तैयार कर लीजिएगा. सारे लेक्चर्स वगैरह मैं आपको जो बाकी हैं वो आपको रेफरेंस मटेरियल के तौर पे दे दूंगा. अब आपको कोई होमवर्क नहीं देना चाहता. होमवर्क यही है कि जो क्वेश्चन मैं दूँ करके बैठो, उसके कोई नंबर मैं नहीं दूंगा, ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास. अब आप छुट्टियों में बैठ के इसकी तैयारी करें, इनके जवाब लिखें, और जब इम्तिहान हो तो इनकी मदद से आप जवाब लिखें. ठीक है जी? Can you speak? Nobody speaking. So I'm finishing the lecture. Thank you very much.